The ongoing political confrontation between the government and opposition has assumed a new, more dangerous nature. It is now pitting state institutions against each other, bringing some into disrepute while pushing almost all of them into the vortex of political controversy. This is leading to national chaos. Several developments in recent days attest to this. To start with, an unseemly public spat took place between President Arif Alvi and the Election Commission of Pakistan. This was sparked by the question of who should set the date for elections to the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa assemblies, which were dissolved in January. President Alvi, acting in support of PTI's demand for immediate dates, asked ECP to announce dates right away. If it failed to do so, it would be responsible for violation of the Constitution. He then invited the Chief Election Commissioner for consultation. ECP declined, saying the matter was sub judice. In a letter, it also objected to the language used by the president and said the commission was well aware of its constitutional obligations. This did not stop the president from unilaterally announcing April 9 as the date for provincial elections. Prime Minister Shehbaz Sharif slammed the move as illegal, adding this wasn't the first time Alvi had acted unconstitutionally. In response to the presidential announcement, ECP turned to the Attorney General, who said the president did not have this power. Soon after, the Chief Justice of the Supreme Court took suo motu notice of the matter, which he described as being of high constitutional importance. A 9-member bench was established to determine who has constitutional authority to fix the election date. Hearings began immediately with varying opinions expressed by SC judges. Never before in the country's tortured political history has a public clash taken place between the two state institutions of the presidency and ECP. The matter now rests with the Supreme Court, but an unfortunate record has been set of two constitutional bodies in head-on collision, with the executive and presidency also at loggerheads. The root of this dispute lies in the ruling coalition's obvious reluctance to hold provincial polls within the constitutionally stipulated 90-day period. This is evident from inaction by PDM-appointed governors in the two provinces and statements by federal ministers. Every state institution is now caught in the crosshairs of the raging political storm. The courts have now become a political battleground in the intensifying confrontation between the PDM government and Imran Khan's PTI. Unable or unwilling to resolve political disputes themselves, the two contending sides take them to court, which is expected to act as an arbiter of politics rather than law. Then, if verdicts do not suit or advantage a particular party, the courts are subjected to criticism and accused of bias. Both sides seek to mount pressure on the courts. The dramatic manner in which Khan registered his presence in the Lahore High Court last week, accompanied en route by thousands of supporters, aimed to do just this. Meanwhile, PMLN leaders continue to direct criticism at the courts, accusing them of double standards. Maryam Nawaz railed against two serving judges of the Supreme Court during an address at a party rally in Sargodha. Defense Minister Khawaja Asif took aim at the judiciary in Parliament to ask whether court decisions in the past were based on political considerations or the public interest. A senior PPP leader accused the LHC of showing preferential treatment to Khan. Several judges have frequently counseled political leaders not to resort to the courts to settle political conflicts. But these entreaties have fallen on deaf ears. Taking political issues to the higher judiciary, in fact, distorts their role as well as makes them the subject of controversy. This risks undermining public trust in judicial institutions in an intensely polarized environment. The pressure the power tussle is exerting on the courts is in fact quite unprecedented. It can even divide the higher judiciary. Already one Supreme Court judge has questioned whether there was a basis for suo motu action on the election date issue. Legal counsel representing political parties now frequently object to the constitution of benches and name which judge should recuse himself from a case. Some members of the country's legal fraternity fear open clashes within and between the higher judiciary in political cases they are dealing with. Meanwhile,
former Army Chief Gen Qamar Javed Bajwa has been at the receiving end of bitter criticism at different times from both sides of the political divide. When Khan was in power, Bajwa faced criticism from PMLN leaders, who accused him of being behind former Prime Minister Nawaz Sharif's ouster and engineering Khan's election victory in 2018. Since Bajwa's retirement, it has been Khan's turn to accuse the ex-army supremo of conspiring to remove him and imposing a corrupt PDM government on the country. Scathing comments about Khan attributed to Bajwa by a journalist who met him further fanned this controversy and fueled a war of words. Khan wrote to the president, as Supreme Commander of the Armed Forces, asking him to institute an immediate inquiry against Bajwa for violating his oath of office. Meanwhile, PMLN leaders, seeking to exploit this, issued statements to breathe further life to the controversy. The revelations in these bitter exchanges only confirmed the hybrid nature of the political arrangement that was in place during Khan's tenure. But the involvement of the country's former top general in such public controversy also has implications for the army's reputation. Obviously, what the former COAS did or didn't do cannot be disassociated from his institution. The episode therefore casts a negative light on the institution's role. Indeed, rarely before has the military establishment's role and responsibility for the country's present political mess been at the center of so much public and media comment and critique. It appears as if almost every state institution is now caught in the crosshairs of the political storm, with its reputation being affected by this. This is pushing the country into uncharted territory where the standing, credibility, and integrity of state institutions is increasingly being called into question. If public trust in institutions is eroded and their legitimacy undermined, this will only leave the country in a more ungovernable state. The writer is a former ambassador to the US, UK, and UN. Published in Dawn, February 27, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी सियासी महाज आराई ने एक नई और ज्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। अब वो रियासती इदारों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है, कुछ को बदनाम कर रही है, जबकि तकरीबन सभी को सियासी तनाज़ात के भंवर में धकेल रही है। इससे कौमी अफरा-तफरी फैल रही है। हालिया दिनों में होने वाली कई पेशरफ्त इस बात की तस्दीक करती है। सबसे पहले तो सदर ममलकत आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान अवामी सतह पर तल्ख कलामी हुई। यह सवाल इस सवाल की वजह से पैदा हुआ था कि जनवरी में तहलील होने वाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात की तारीख कौन तय करेगा। सदर आरिफ अलवी ने PTI के फौरी तारीखों के मुतालबे की हिमायत करते हुए ECP से फौरी तौर पर तारीखों का ऐलान करने का कहा। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहा तो वो आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार होगा। इसके बाद उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए मदऊ किया। इलेक्शन कमीशन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। एक खत में इसने सदर की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान पर भी एतराज़ किया और कहा कि कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ है। उसने सदर को यकतरफा तौर पर सूबाई इंतखाबात की तारीख 9 अप्रैल का ऐलान करने से नहीं रोका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस अक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब आरिफ अलवी ने गैर आइनी काम किया है। सदारती ऐलान के जवाब में ECP ने अटॉर्नी जनरल की तरफ रुख किया, जिन्होंने कहा कि सदर के पास ये इख्तियार नहीं है। इसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले का आज खुद नोटिस लिया, जिसे उन्होंने आला आइनी अहमियत का हामिल करार दिया। इंतखाबात की तारीख तय करने का आइनी इख्तियार किसके पास है, इसका तयन करने के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से मुख्तलिफ आरा के इजहार के साथ समाअत फौरी तौर पर शुरू हुई। मुल्क की अजियतनाक सियासी तारीख में इससे पहले कभी भी ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन के 2 रियासती इदारों के दरमियान अवामी तसादुम नहीं हुआ। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पर मुनहसर है,
लेकिन एक बदकिस्मत रिकॉर्ड कायम किया गया है कि दो आईनी इदारों के दरमियान आमने सामने टकराव है और एग्जीक्यूटिव और अवान सदर के दरमियान भी इख्तिलाफात हैं। इस तनाज़े की जड़ हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से आईनी तौर पर तयशुदा 90 दिन की मुद्दत के अंदर सूबाई इंतखाबात कराने में वाज़ेह हिचकिचाहट है। इसका सबूत दोनों सूबों में PDM के मुकर्रर करदा गवर्नर्स की गैर फालियत और वफाकी वज़रा के बयानात हैं। हर रियासती इदारा अब भड़कते हुए सियासी तूफान के करास बालों में फंस चुका है। PDM हुकूमत और इमरान खान की तहरीक इंसाफ के दरमियान बढ़ती हुई महाज आराई में अदालतें अब सियासी मैदान जंग बन चुकी हैं। सियासी तनाज़ात को खुद हल करने से कासिर नापसंदीदा दोनों फरीक उन्हें अदालत में ले जाते हैं, जिससे तवक्को की जाती है कि वो कानून के बजाय सियासत के सालिस का किरदार अदा करेगी। फिर अगर फैसले किसी खास फरीक को फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं तो अदालतों को तनक़ीद का निशाना बनाया जाता है और तासुब का इल्ज़ाम लगाया जाता है। दोनों फरीक अदालतों पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। खान ने गुज़िश्ता हफ्ते जिस ड्रामाई अंदाज में लाहौर हाई कोर्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिसमें हज़ारों हामी भी शामिल थे, इसका मकसद ऐसा ही करना था। दरअसल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अदालतों में उन पर दोहरे मेयार का इल्ज़ाम लगाते हुए तनक़ीद का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सरगोधा में पार्टी जलसे से खिताब के दौरान मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जजों के खिलाफ शदीद तनक़ीद की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में अदलिया को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए पूछा कि क्या माजी में अदालती फैसले सियासी मसलहतों पर मबनी थे या अवामी मफाद पर। पी के एक सीनियर रहनुमा ने लाहौर हाई कोर्ट पर इमरान खान के साथ तरजीही सलूक करने का इल्ज़ाम आयद किया। कई जजों ने अक्सर सियासी रहनुमाओं को मशवरा दिया है कि वो सियासी तनाज़ात को हल करने के लिए अदालतों का सहारा न लें, लेकिन ये बातें बहरे कानों पर पड़ी हैं। सियासी मामलात को आला अदलिया में ले जाना दरहकीकत उनके किरदार को मस्ख करने के साथ साथ उन्हें तनाज़ा का मौजू भी बना देता है। इससे शदीद पुरराज माहौल में अदालती इदारों पर अवाम के एतमाद को नुकसान पहुंचने का खतरा है। इक़्तिदार की कशमकश अदालतों पर जो दबाव डाल रही है वो दरहकीकत बेमिसाल है। ये आला अदलिया को भी तकसीम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज पहले ही सवाल उठा चुके हैं कि क्या इंतखाबात की तारीख के मामले पर अज खुद नोटिस लेने की कोई बुनियाद है। सियासी जमातों की नुमाइंदगी करने वाले कानूनी वकील अब अक्सर बेंचों की तश्कील और नाम पर एतराज़ करते हैं कि किस जज को खुद को केस से अलग करना चाहिए। मुल्क की कानूनी बरादरी के कुछ अरकान को खदशा है कि आला अदलिया के अंदर और उनके दरमियान सियासी मुकदमात में खुलम खुला तसादुम होगा। दरअसल साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सियासी तकसीम के दोनों अतराफ से मुख्तलिफ औकात में सख्त तनक़ीद का सामना करना पड़ा है। जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो बाजवा को मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से तनक़ीद का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने उन पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बरतरफी और 2018 में इमरान खान की इंतखाबी कामयाबी के पीछे होने का इल्ज़ाम लगाया था। बाजवा की रिटायरमेंट के बाद से इमरान खान की बारी है कि वो साबिक आर्मी चीफ पर उन्हें हटाने और मुल्क पर करप्ट PDM हुकूमत मुसल्लत करने की साजिश करने का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। खान से मुलाकात करने वाले एक सहाफ़ी की जानिब से बाजवा से मंसूब किए जाने वाले सख्त रिमार्क्स ने इस तनाज़ा को मज़ीद हुआ दी और लफ्ज़ी जंग को हुआ दी। खान ने मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से सदर को ख़त लिखकर बाजवा के खिलाफ अपने ओहदे के हल्फ की खिलाफ वर्जी करने पर फौरी तहक़ीक़ात करने का मुतालबा किया था। दरअसल मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हुए इस तनाज़े को मज़ीद ज़िंदा करने के लिए बयानात जारी किए। इन तख्त तबादलों में होने वाले इंकिशाफ़ात ने खान के दौर हुकूमत में सियासी इंतज़ाम की हाइब्रिड नोयत की तस्दीक की है, लेकिन इस तरह के अवामी तनाज़ात में मुल्क के साबिक आला जनरल के मुलव्वस होने से फ़ौज की साख पर भी असरात मुरतब होते हैं। जाहिर है कि साबिक आर्मी चीफ ने जो कुछ किया या नहीं किया उसे उनके इदारे से अलग नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये वाक़या इदारे के किरदार पर मनफी रोशनी डालता है। दरहकीकत इससे पहले शाज़ व नादिर ही फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार और मुल्क की मौजूदा सियासी बदहाली की जिम्मेदारी अवामी और मीडिया के इतने ज़्यादा तबसरों और तनक़ीद का मरकज़ रही है। ऐसा लगता है कि तकरीबन हर रियासती इदारा अब सियासी तूफ़ान के करास बालों में फंस चुका है और उसकी साख इससे मुतासिर हो रही है।
ये मुल्क को एक ऐसे नामालूम इलाके में धकेल रहा है जहां रियासती इदारों की साख और सालमियत पर तेजी से सवालात उठाए जा रहे हैं। अगर इदारों पर आवाम का एतमाद खत्म हो जाता है और उनकी कानूनी हैसियत को कमजोर किया जाता है तो ये मुल्क को मजीद गैर सरकारी हालत में छोड़ देगा। मजमून निगार अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ सफ़ीर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 27 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.